But so what you're basically hinting at is indiscriminate lending, right? That's what you would call कि बिना किसी के जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना what we call due diligence, whether the person or the project we are giving our money to is backed by solid market research, backed by solid collaterals or stuff like that. How much of that would be the reason then? सर आप एक चीज समझिए, जब एक बड़ी कंपनी फेल होती है इन सिंपल मैन्स लैंग्वेज, चाहे इंसॉल्वेंसी में जाए, लिक्विडेशन में जाए, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है उसने तो कोलैटरल दिया हुआ, उसको तो कम से कम कोलैटरल है, सिक्योर्ड चार्ज है, उसको मालूम है बैंक की कंपनी की हालत क्या है, बैलेंस शीट का इनसाइड आउट उसको मालूम है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसको बहुत अच्छा मोटा हेयर कट मिलता है, उसको मे बी उसका ड्यू का 20%, 30%, 25%, टुडे द रिकवरी रेट इज समवेयर स्टार्टेड एट 43%, इट इज नाउ टू 31-32%। उसको उसका उतना पैसा मिल रहा है, बट एक्चुअली 32% इज आल्सो गुड, क्योंकि दैट 32% आउट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्लेम, वो क्लेम इतना इन्फ्लेट हो चुका होता है इंटरेस्ट मिला के, तो टू सम एक्सटेंट चलो ठीक है। इसमें जो मरता है, वो जो सबसे ज्यादा खराब हालत होती है, दैट इज द ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट इज द ट्रेड क्रेडिटर। नाउ यू हैव सप्लाइड ऑन गुडविल बेसिस, ना आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डेटेड चेक है, यू डोंट रियली हैव एनी पोजीशन, बार्गेनिंग पावर आपकी है नहीं, आप न सीओसी में, आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में आपको यू डोंट हैव अ पोजीशन. So somebody else, actually, in fact, I have this personal grievance in this law. How is it justifiable for somebody else, which is a banker or a financial institution, to sit in a committee of creditors and take a decision on behalf of all other stakeholders, which is binding on all the stakeholders? So ये unfortunate reality है कि operational creditor जो होता है, उसको इस system में, for that matter, they get very less, कभी 3%, 5%, 7%, 10%. I mean, a best case, I won't say best case, but ज्यादातर हम यही देखते हैं कि 10 से 20% of the total due is what a trade creditor gets. Supreme Court is very clear कि IBC is a law which is primarily for the financial creditors, and therefore they are supposed to be getting a special treatment and things like that. लेकिन कुछ changes हो रहे हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, एक शुगर कंपनी थी, तो शुगर कंपनी में फार्मर्स को, the farmers had come and agitated, तो उनको they have been given special treatment at par with the financial creditors. They have not been given the trade creditors वाला मतलब status. तो कहीं ना कहीं I think अब ये जो pain that you're talking about has started reaching the ears of the government. I think at some point hopefully we can hope कि कुछ उसमें सुधार हो. There's because some solution is required. Otherwise the business industry will collapse at this rate because they are getting hit quite a bit. Once the company goes into insolvency, there is something called moratorium. जो कंपनी पे moratorium लग जाता है, तो उस टाइम पे सी इलेक्ट्रिसिटी, योर वाटर सप्लाईज, व्हाटएवर इज द एसेंशियल गुड्स टू कीप द रनिंग कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न, वो आपको देना होगा. दोस सप्लाईज विल हैव टू बी मेड. सो लॉट ऑफ गवर्नमेंट सप्लाईज कैन नॉट बी स्टॉप्ड merely because the company goes into insolvency. और एक इसमें फिर एक अमेंडमेंट बाद में ये भी आया, which is again a double edged sword, कि अगर जो उसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, जो आदमी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, who's running the show, उनको लगता है कि you as a raw material supplier, आपका मटेरियल इज इंपॉर्टेंट टू कीप द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न, यू बिकम ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई. तो देन तो इट बिकम्स अनफेयर ऑन यू. एक तो आप ऐसे ही आप मरे हुए हो, आपको पुराना ड्यूज आना बाकी है, प्लस यू हैव टू ऐड, बट देन वहां देयर इज अ प्रोटेक्शन. if they are taking supplies from you during moratorium under the insolvency professionals, I would say, supervision, you are supposed to get paid from time to time for those supplies. Those supplies should not be on credit or should not be on undue credit. It has to have at a mutual this thing. So you have to be paid. But हाँ, ये होता है कि the larger operational creditors do suffer, but at the same time, there are a lot of government dues also which are wiped out. बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ये बहुत बड़ा ग्रीवांस है कि सर इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी, इट गेट्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट. ये एंड ऑफ द डे ये पैसा कहाँ है? व्हाट हूज इट इज एट आउट दे आर टैक्स पेयर्स मनी ओनली ना. देखिए, प्रमोटर को यहाँ मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि व्हाटएवर सेड एंड डन, 10 में से, चलिए लेट्स बी वेरी फेयर, 50% प्रमोटर यू गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल चैलेंजेस, कोविड आ गया, कोविड के पहले कुछ और चैलेंजेस थे, and therefore their company went into a bad thing. At least there are 50% promoters who have also been part of this situation where the company has gone into insolvency and they have also been part of it. So you can't keep giving them again another opportunity कि भैया ठीक है प्रोसेस रन करते हैं and फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहिए. So that it's a very chicken and egg situation.
That is where in India we have moved from a debtor in control regime to a creditor in control regime. लेकिन इसका, as your friend rightly said, this has its own challenges, कि जब आप creditor in control regime चलाते हैं तो issue ये होता है कि control कौन कर रहा है? Financial creditors, bankers, they become the new board of directors informally. Decisions सारे वो लेते हैं. उनके सारे decisions का एक ही मूल होता है घूम फिर के, मुझे रिकवरी कितनी मिलेगी. अगर आप आईबीसी का इंटेंट पढ़ेंगे, कोड का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, रिकवरी वर्ड है ही नहीं उसमें कहीं. द वर्ड इज ओनली वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि दे अंडरस्टैंड दैट नो, वी शुड बी टॉकिंग ऑफ रेजोल्यूशन and not just recovery. So these businesses that did take advantage of the situation, I mean, but were they in a ratio? Would you consider them to be in a ratio where they were statistically significant that led to this mess? Like, do you think Indian NPAs were that much of a problem? देखिए, सक्सेस ऑफ द लॉ आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड. कुछ हद तक हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफी सुधार हुआ है. Our banks which were at a loss, again I have some numbers for you. 2017-18, the Indian, all the banks put together, official data, was making a loss of 32,438 crores. 2022-23, the official data is 2,22,135 crores of profit. हमारे बैंक्स लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पे आ गए हैं. हमारा एनपीए 2.3 था 2008 में, 2018 में बढ़ के 11-11.5% हुआ. अभी वापस 3.9%, इट्स अ 10-year low, which means asset quality is increased. Entrepreneurial, I would say, commitment towards repayment is getting better. Financial discipline, एक comprehensive system है जहां आपको 10 जगह जाके नहीं करना है चीजें, एक जगह consolidate करना है आप चीजों को, system को. So that is the other positive thing which I see somewhere or the other. So what were these practical issues when it comes to be fair, when we face in terms of procedures and consequences? Like, what used to happen before IBC came in? आप पुराने इसमें जाइए, आप BIFR के समय पर देखिए. कंपनीज which used to go into BIFR, पहली बात तो लोग BIFR में सिर्फ एक वो रजिस्ट्रेशन लेके बैठ जाते थे because you have moratorium against all recovery proceedings. But ठीक है, that is a different subject. In BIFR, the restructuring schemes that used to happen, or even under winding up the restructuring schemes that used to happen, उसमें भी it used to take years together. It used to take 5 years, 10 years, 15 years, and there was no, I would say there was no specific body or a court specifically looking into it. Compared to that, the resolution plans that we are seeing, implementation time frame, it is in black and white. Resolution plan में लिखा है. That will come in the order copy of the final approval of the resolution plan. तो आपको मालूम है कि at a practical level we have seen resolution plans mostly of an implementable period of 6 months to 3-4 years. This is the by and large industry, मतलब 6 महीना से लेके 40 months or 48 months or whatever. Of course, some very large companies goes up to 7 years and 6 years. So at least you have some clarity कि things are going on track or not. Issue क्या होता है सर, देखिए, एक तो एक मेंटल ब्लॉक ये होता है कि why to put good money behind bad money. Already I have lost a fair bit of money. It again will depend a lot on what kind of business it is, what are the revival prospects, कितने ये लोग देखिए. By now the committee of creditors, bankers are also kind of maturing. इनको समझ में आ जाता है कि इस कंपनी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफी आ रहे हैं. जैसे हमने पेपर में बिड डाला, lot of people are coming in. This company is a good going concern. Revenues आ रहे हैं. अगर हम X amount of money डालते तो 3x या 2x का हमें revenues आ रहा है month on month. In those cases, interim finances do happen. They have happened. But I agree with you that in a large number of cases, especially brick and mortar companies जो SMEs हैं, again factory 3 साल से 5 साल से वैसे भी बंद पड़ी थी. Insolvent होने के पहले जहां 2-3 साल बंद पड़ी थी, there is no way you can expect कि during the insolvency process कि आप interim funding लेके आएंगे from these committee of creditors or from some third party or whatever be the case, more so from the COC members, and फिर आप उसको revive करेंगे. ये नहीं होता है, and it's something which is a practical problem. But at the same time, please understand that the objective of the law is not to make a defunct company become a going concern or a running concern during the process. At the end of the process, it should have got revived.
if an implementation of a resolution plan fails midway, वहां पर you are in a double mess, because then you are neither here nor there. You go back to the NCLT, you seek some more time for implementation of the plan. The law says कि if implementation of a plan fails, you can put the company into liquidation. लेकिन liquidation में आप नहीं डाल सकते practically, क्योंकि जिस acquirer which is called resolution applicant, जिसने already थोड़ा पैसा डाल दिया है कंपनी में, वो liquidation में जाने will not like it to go to liquidation. So there are practical challenges, there are practical problems. But having said that, implementation of a resolution plan under IBC is more transparent, is relatively more, I would say, time bound, or what we are seeing at the ground level, 2 to 3 years or 3 to 4 years is the time frame within which people either get paid or they don't get paid. One way or the other, you know, आपका एक chapter खत्म हो रहा है. Resolution versus liquidation का जो ratio है, that is 1:3. As of 30th June, based on the data that we have, 720 plans have got approved and 2,120 companies have gone into liquidation. So motamoti 1:3 is the ratio. Lekin as Dr. Sahu, who was the first regulator of who was the first chief of IBBA, always said, ease of exit is also equally important. हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही, ईज ऑफ एग्जिट भी लाना होगा. रही तीसरी बात, लेकिन व्हाई डोंट वी रियलाइज वन थिंग, भैया हमारा ये देश है जहां हम लोग बात करते थे 5 साल 3 साल 8 साल 7 साल, कोई सिर पैर नहीं है. ओके चलो, आईबीसी में 180 days plus 90 days, you talk about 270 days. What are you benchmarking it against? Let's come and let's benchmark it again. Let's call बोलते हैं ना एप्पल एंड ऑरेंजेस का, या एप्पल एंड एप्पल का वो करते हैं. Let's benchmark it against the previous regime. BIFR में कितना समय लगता था एक रीस्ट्रक्चर, एक स्कीम को अप्रूव होने में या स्कीम को इम्प्लीमेंट होने में. उसके अलावा जो भी इफ एट ऑल देयर वाज अ वाइंडिंग अप का थोड़ा बहुत होता था, स्कीम्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, they used to all go on for years. 5 साल 7 साल 8 साल. Since we are on data, I have data with me here which says the average time taken for closure of a insolvency process is 632 days. मान के चलिए कि 2 साल भी लगता है. In 2 years, end to end, you are having a solution one way or the other. I have seen this actually. Quite a few of the members in the NCLT and NCLAT, they are working day and night. सुबह से शाम they are working. उनके ऊपर केस लोड इस हिसाब से है 20-20 हजार केस, 10-10 हजार केस. I have one data with me. 2022-23 तक 25,107 applications have been withdrawn before admission of insolvency, जिसमें 8.8 lakh crores has been settled between the parties. Will you believe that? मतलब किसी ने केस फाइल किया, सामने वाले ने आके पहले ही सेटल कर दिया, एडमिशन के पहले. ये मतलब बिफोर इट गोज इनटू द ऑफिशियल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, मोटा मोटी 9 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आ चुका है 25,000 केस में. So you can imagine the pressure on the judiciary which is there, NCLT, NCLAT. So we have to ramp up the infrastructure. Finally, the thing which I had touched upon somewhere midway, कहीं ना कहीं हमें, at least ये मेरी पर्सनल राय है, I may be some may agree, some may disagree, we have to bring in once again the high courts का some intervention, some jurisdiction into this. एक ये जो mindset एक create हो गया था काफी कुछ साल से कि the moment civil courts interfere delay होता है, आप ये समझिए कि वो I agree with you, वो है अपनी जगह, लेकिन ये भी अपने को मानना पड़ेगा कि ट्राइब्यूनलाइजेशन एक हद तक सही है, उसके ऊपर somewhere you need high court. और NCLAT में जब आप lose करते हैं, especially when you are in the south of India, you straight away have to go to the Supreme Court. How affordable is it for every man to go to the Supreme Court? You know what are the costs of litigation in this country? Absolutely, so absolutely. तो वो हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है सर, और स्पेशली जब आप 2-4-5 करोड़ का लड़ाई कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. भले यू टेक इट टू द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, बट सम jurisdiction from the high court also has to be brought in somewhere, I feel, which is something more on the judicial side. But yes, that's going to be my, I would say, the good, the not so good, and possibly things which we should be looking at in the coming times.